are going to discuss the concept of another design pattern, that is a factory design pattern, right? So in here we will learn first the basic of the factory design pattern, then we will go for why we have to go for the factory design pattern. That means, can we do the same job in case we do not know the factory design pattern? In case if we know the factory design pattern, what will be the advantage of using it? Of course, I will try to implement that with the help of an example in Java, right? Then I will go for the discussion about the advantage of the factory design pattern, right? So very first thing, the basics of the factory design pattern. What are the basics? This is one of the most used design pattern in real world applications, right? If I says this is the design pattern that is used in most of the framework. The framework can be in Java, it can be in the JavaScript, it can be in the Python. If I go for the Java, I will go for the Spring Boot. If I go for JavaScript, I will go for the Angular, I will go for the React, right? And if I go for the Python, I will think of the Django, right? That's why we have to learn the factory design pattern. Second, it comes in the category of creational design pattern, right? From the past experiences, we know what the creational design pattern is, or we know how many type of design patterns, or in how many categories we divide the design patterns. You can go for its detail from my previous video, but here I am going for the factory design pattern. It is in the category of creational design pattern, that is, it is used to create the objects, right? Another, factory design pattern creates object without exposing. So creational create the object. So what the advantage of this is, it creates the object without exposing the creational logic to the client. Who the client is? Whoever is going to make the use of this class or this design pattern is the client, right? So let's think of it without making the use of factory design pattern. In case we don't know factory design pattern, what is the way to implement it? First, I will create the class 1, clarifying with the help of the product 1, product 2, and then that will be used by the user. The example is this. Let's say we have created a class named square, having a class square, having a function that is void draw. Of course, you can write any functionalities. For simplicity, I have written just system.out.println. On the same concept, I am with another class named rectangle, and in the rectangle 2, I am with the function draw. So product 1, product 2, I have created. Next, what I have to do? I have to go for the client, and what the client do for this? It create the reference of the square class, create its object. It create the reference of the rectangle class and create its object. And using the object, it call the function draw. So for both the object, I am using the same reference. In Java, please do not write like this. Either write this statement or write this statement, but this statement is common, right? Reason being, the name of the function, that is draw, is there in the both the classes. But if I says who this is the client. These two are the products being used by this client. For this, what it need? It need to expose it with its constructor, with the help of its constructor. ठीक है? अगर हम इसी क्लास को या इसी कॉन्सेप्ट को एक अलग कॉन्सेप्ट से बनाना चाहें तो उसके लिए हम क्या करेंगे? वी विल क्रिएट अ shape.java, that is an interface having one function, that is draw. Next, हम implement करेंगे इसी इंटरफेस को इन अ क्लास स्क्वायर, राइट?
सबको पता है हाउ टू क्रिएट अ क्लास इन जावा दैट इंप्लीमेंट द इंटरफेस यूजिंग द इंप्लीमेंट कीवर्ड। हमने क्या करा इसके अंदर, एक फंक्शन जो हमारे पास शेप में था, राइट, उसी को क्या कर दिया, रीडिफाइन कर दिया, ओवरराइड कर दिया, राइट, विद द सेम फंक्शनैलिटी। ऑन द सिमिलर पैटर्न आई हैव क्रिएटेड अ रेक्टेंगल क्लास जो इंप्लीमेंट कर रही है शेप को, और उसमें भी हमने वही ड्रॉ वाला फंक्शन लिख दिया। देन अब यूज कैसे करेंगे इसको, दिस इज द वे जिसमें हमने क्या करा, मेन डिफाइन करा और शेप क्लास का एक रेफरेंस क्रिएट करा। वी कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंटरफेसेस और द एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। तो व्हाट वी हैव डन, हमने क्रिएट करे हैं दो ऑब्जेक्ट, ऑफ कोर्स ओबीजे ओबीजे ऑफ द रेफरेंस, सॉरी ऑफ द shape type. Then we have created the object of square, object of rectangle. So the way is same. In the first case, what we were using, we were creating the square and rectangle, two different classes. But in this case, what we have done, we have created a new interface having the function draw, and then what we have done, we have implemented two classes. But in both these cases, what we are doing, we are creating the object, right, we are creating the object using the constructor of the products, that is either square or rectangle. If I go for, do you think it is a good design? But if I says, we all know the coding only, we don't know anything about the design. But let's say, in case if I go for this question, is it a good design? Just read it and find it out. Or if I read it for you, as you must have observed in both the examples, the client creates the object of either square or rectangle using its constructor. तो हमने दोनों ही एग्जाम्पल में क्या करा है, स्क्वेयर या रेक्टेंगल क्लास के कंस्ट्रक्टर यूज किए हैं टू क्रिएट इट्स ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने क्या करा है, लेट्स से आई वांट टू क्रिएट अ न्यू क्लास नेम्ड ट्रायंगल। मैंने एक नई क्लास बनाता हूं, तो क्या मैं स्क्वेयर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल बना सकता हूं? ऑफ कोर्स बना सकता हूं। लेकिन अगर मैं क्या चाहता हूं कि मैं उसी क्लास को यूज करके क्लाइंट में उसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका जो कंस्ट्रक्टर है, आई हैव टू एक्सपोज दिस टू द मेन। दैट मीन्स जो मेन है उसको उसका कंस्ट्रक्टर पता होना चाहिए, ठीक है। बिना उसको पता किए वो काम नहीं कर सकता जब तक उसे कंस्ट्रक्टर्स नहीं पता, राइट। दैट्स व्हाई वी से इट्स अ वेरी बैड प्रैक्टिस ऑफ डिजाइन। सो द सॉल्यूशन इज फैक्ट्री डिजाइन, ठीक है जी। आई थिंक दिस इज क्लियर कि अगर हम फैक्ट्री डिजाइन नहीं करते तो हमारे पास क्या प्रॉब्लम है। हम क्लासेस बनाते हैं लेकिन उनके कंस्ट्रक्टर जहां पे भी हमें मेन बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको यूज करना पड़ेगा, उसको एक्सपोज करवाना पड़ेगा, ठीक है। बट इन केस वी डू नॉट वांट टू एक्सपोज दिस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन एनी सॉफ्टवेयर लेट द डेवलपर प्रोवाइड द सॉल्यूशन एंड क्रिएट द फर्स्ट क्लास हैविंग अ lot of function or functionalities. Now the project need to include another solution for the same problem, and the user can use any of the solution. So the developer need to create another class having all the functions or functionality. Again, is this a good design? मतलब अगर मैं बोलता हूँ, अगर मेरे को एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें मेरे पास पेमेंट का तरीका क्या है, लेट्स से आई वांट टू मेक द पेमेंट यूजिंग द नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग में क्या होगा भाई, कैश चेक, सॉरी, पहले नेट बैंकिंग से यूज़र आईडी पासवर्ड लेगा, उसके बाद चेक करेगा कैश है नहीं है, उसके बाद ओटीपी जनरेट होगा, एक प्रॉपर वे है, ठीक है। बट अगर मैं सेम सीक्वेंस, अगर मैं सेम कॉन्सेप्ट, इनिशियली जब मेरा प्रोजेक्ट था तो मैंने ये ऑप्शन यूज़ किया, अब मैं क्या करता हूँ, एक नया तरीका ऐड करता हूँ पेमेंट करने का, दैट इज यूजिंग द क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सारी फंक्शनलिटी वहाँ पे लिखनी पड़ेगी, और मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इफ एल्स लगाना पड़ेगा ताकि मैं इंटरचेंजेबली डिपेंडिंग अपॉन माई रिक्वायरमेंट स्विच करूं। लेकिन अब यहां पे क्या है, कैन आई यूज द डिजाइन पैटर्न, और अगर मुझे डिजाइन पैटर्न यूज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दो प्रोडक्ट्स के बीच में, एक यूजर के बीच में एक क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट लगाना पड़ेगा। यूजर कौन है, मेन, क्लाइंट कौन है, एक एडिशनल क्लास, ऑफ कोर्स जो हमें क्या प्रोवाइड करती है, फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न या फैक्ट्री मेथड्स प्रोवाइड करती है,
राइट। अब इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने एक क्लास फैक्ट्री बनाई जिसके अंदर क्या करा, एक क्रिएट क्लाइंट नाम का फंक्शन बनाया जो क्या करता है, एक शेप रिटर्न करता है, ऑफ कोर्स जिसका टाइप स्टैटिक है, जिसको जो पब्लिक है, सो दैट एवरीबॉडी कैन यूज इट, जो एक पैरामीटर लेता है टाइप, टाइप के ऊपर बेस्ड क्या करता है, ये स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्लास के ऑब्जेक्ट बनाता है और उनको रिटर्न करता है। तो अगर मैं ये करता हूं तो मेरे में क्या करा, एक क्लास फैक्ट्री बनाई है जिसके अंदर क्या है, कंस्ट्रक्टर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो जहां पे मेन होगा, तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री का यूज करना है, और फैक्ट्री के भी किसका, स्टैटिक मेथड का, जो था क्रिएट क्लाइंट, जिसमें मैंने 1 पास किया तो इट इज गिविंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट क्लास, ऑफ कोर्स स्क्वायर 2 पास किया तो इट इज गिविंग द रेक्टेंगल, अगर मैं 3 पास करूंगा तो ऑफ कोर्स इट विल गिव मी द ट्राइंगल, द न्यूली क्रिएटेड क्लास। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट डॉट ड्रॉ। अब मैं जिसके साथ भी जो भी मैंने ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, आई डोंट नो इट्स being main, being user, I do not know the constructor of any of the class, right? So whatever I am passing, whatever the parameter I am passing, it will call the constructor, and after that it will create the object for me of the respective class, and of course this draw will work with that object. Now let's go for its advantage. What are the advantages of factory design pattern? Very first advantage is factory design pattern provides approach to code for interface rather than implementation. That means जो हमारी पहली अप्रोच थी जिसमें मैंने क्या करा, 2 क्लासेस बनाई है और उनके ऑब्जेक्ट बना लिए, उससे थोड़ा आगे चलता है, क्या करता है, इट प्रोवाइड्स द अप्रोच टू कोड फॉर इंटरफेस। जो हमारा दूसरा तरीका था उसको यूज करता है ये, ठीक है। तो क्या करता है, एक इंटरफेस बनवाता है और उसके 2 इंप्लीमेंटेशन करवाता है, 2 3 जितनी भी हमें क्लासेस बनानी है। देन फैक्ट्री पैटर्न रिमूव द इंस्टेंशिएशन ऑफ एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्लासेस फ्रॉम क्लाइंट कोड। मेन में हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करना, हमें क्या करना है, मीडिएटर, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, फैक्ट्री पैटर्न, राइट। जिससे क्या होता है, इट्स कपलिंग बिकम लेस and it is easy to extend. For example, we can easily change square, rectangle class implementation because client problem is unaware of this. मतलब हम उसके अंदर फंक्शनैलिटी में कुछ भी ऐड करें, मान लो पहले हमारे पास सिर्फ एक ही फंक्शन था, सिस्टम डॉट आउट, हमने एक ही फंक्शनैलिटी कॉल की थी, दैट वाज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब उसके अंदर हमने 3 4 5 या 100 लाइन्स ऑफ कोड हमने लिख दिए, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है, coupling is not there. Then factory pattern provides abstraction between implementation and client class through inheritance, right? I hope everybody know the advantage of inheritance. That means in case we are going for factory pattern, it provides abstraction between implementation and client classes through inheritance. I think it is just a repetition of the very first point, right? That's all from my side. For the implementation of this, you can wait for the next video where I will try to implement this in Java. Thank you.